हुँ, मुझे करनी है ना इंट्रो? हुँ, तो आज है हमारा कॉमिक नरेशन डे 10। आज कुछ क्रेज़ी इश्यूज़ पढ़ने वाले हैं हम लोग और आज मेरे ख़्याल से सबसे अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट इश्यू हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। पिछला हम लोगों ने ये एवेंजर्स की कॉमिक रन में हम लोगों ने पिछला इश्यू पढ़ा था ये, इसका नाम था स्ट्रॉन्ग। इस इश्यू में हमने देखा कि सैवेज लैंड के अंदर जब हाई इवोल्यूशनरी ने उन बच्चों को अबडक्ट कर लिया था, जो कि हिपेरियन के बच्चे होते हैं। तो हमें थोड़ा-सा यहाँ पे हिपेरियन के बारे में कुछ बताया जाता है कि उसने काफ़ी चीज़ें क्रिएट करी, यहाँ पे काफ़ी टाइम से है वो सैवेज लैंड के अंदर, वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है और उसने बीस्ट वगैरह बनाए हैं और उसने कुछ नई मशीनें बनाई हैं जिनके अंदर इन बच्चों को एज़ अ बैटरी की तरह वो डालता है। उसके बाद यहाँ पर हिपेरियन काफ़ी परेशान हो जाता है और ढूँढता है आयरन मैन इन बच्चों को, पर उसे कुछ भी सिग्नेचर्स नहीं मिलते हैं। उन बच्चों के कोई साइन नहीं दिखाते हैं उनके उसकी स्क्रीन पर। यहाँ पर दूसरी पार्टी एक दूसरे वे से मतलब लाइक ऑर्गेनिक वे में खोजते हैं उन बच्चों को, स्पाइडरमैन, स्पाइडर वुमन और हॉकाई। साथ ही साथ कैप्टन यूनिवर्स भी खोज रही होती है, पर एक केव के अंदर उसे ये वॉचर मिलता है यहाँ का, जो सैवेज लैंड को काफ़ी टाइम से देख रहा होता है और फिर ये हेल्प करता है इन लोगों की, बताता है कि हाई इवोल्यूशनरी का ठिकाना किधर है। फिर हम देखते हैं कि हाई इवोल्यूशनरी वो जो बैटरीज़ थी, वो किसी एक बहुत बड़ी मशीन के अंदर लगा रहा होता है और वो उन बच्चों को बहुत तकलीफ़ हो रही होती है और वो बच्चे जो हैं हिपेरियन को याद कर रहे होते हैं। फिर ये आदमी जो है, लोगों को लेकर जाता है एक पहाड़ के पास और वहाँ पर स्पाइडरमैन जैसे ही उसको टच करता है, वो एक दूसरे लाइक उसमें आ जाता है। मैं कहूँगा एक पोर्टल रहता है या फिर एक इनविजिबल वॉल रहती है जिसको वो क्रॉस कर आगे बढ़ता है तो उसे दिखाई देती है हाई वेलोसिटी की शिप या फिर बेस कह सकते हैं। उसमें से काफ़ी सारे वही म्यूटेटेड बीस्ट्स निकलते हैं जिनके ऊपर उसने पहले से एक्सपेरिमेंट कर रखा होता है हाई एवोल्यूशनरी ने। फिर उसके बाद यहाँ पर सारे एवेंजर्स घुसते हैं, एक ऑल इन फाइट होती है हाई एवोल्यूशनरी के बीस्ट्स के साथ और यहाँ पर हिपेरियन जो है वो हाई हाई एवोल्यूशनरी को सॉरी यहाँ पर हिपेरियन जो है वो हाई एवोल्यूशनरी के पास पहुँचता है। तभी यहाँ पर देखते हैं सारे एवेंजर्स कि एक बहुत बड़ा रोबोट जायंट रोबोट हैंड जो है उन्हें पकड़ता है और मारना शुरू करता है और वो होता है टर्मिनस। टर्मिनस बेसिकली एक आप इसे गैलेक्टस की तरह समझ सकते हो, पर ये एक इतना मतलब उस लेवल का बीइंग नहीं है। पर हाँ, ये बहुत पावरफुल कॉस्मिक लेवल बीइंग है और ये एक साइबॉर्ग है, जो कि प्लैनेट्स वगैरह ही डिस्ट्रॉय वगैरह करता है जाके, लोगों को मारता है। मतलब ये कॉस्मिक लेवल बीइंग है, इंटरगैलेक्टिक। ये एक स्कैवेंजर की तरह कह सकते हो उसे। फिर यहाँ पर सभी उससे टर्मिनस को फाइट कर रहे होते हैं। थॉर जो है वो अपनी फुल पावर से उससे लड़ना शुरू करता है। हिपेरियन यहाँ पे जब हाई इवोल्यूशनरी को मार रहा होता है, तो यहाँ पर हाई हाई इवोल्यूशनरी बताता है कि टर्मिनस के अंदर ही वो बैटरीज़ लगी हैं जिनके अंदर वो बच्चे होते हैं। फिर हिपेरियन जो है वापस पहुँच रहा होता है उन्हें बच्चों को बचाने के लिए, क्योंकि थॉर जो है अपनी फुल पावर से उसके ऊपर एक भयंकर लाइटनिंग बोल्ट जो है मारने वाला होता है। जैसे ही वो मारता है, हिपेरियन उन बच्चों को लेकर वहाँ से उड़ जाता है उसकी बॉडी से और वो बचा लेता है उन बच्चों को। फिर एक अ डीप कन्वर्सेशन होती है हिपेरियन और थॉर के बीच में। यहाँ पर हिपेरियन कहता है कि वो बच्चे उसकी वीकनेस नहीं, उसकी स्ट्रेंथ है। अब अगला इश्यू थ्रोन्स, जो कि पढ़ेंगे जीसस ब्रो। Thrones. 1 month later. Somewhere in the Orion spur of the Milky Way galaxy. So, nothing? It's all quiet, Anthony. 28 days since our last incursion, and our new early warning system shows clear skies for at least the next 12 hours. Four world ending events in a 16-day period of time. And now nothing but silence.
Tell me, Reed, is this bothering you as much as it is to me? Yes, but the good news apparently is the Spawn says the eat that the endless fear of losing everything subsides when the first Earth you call home dies. Fills you with hope, doesn't it? Well, it's nice there's a word for it. What else has Our Lady of the Apocalypse been up to? Jala and I spend the most time with her, trying to parse the difference between actionable intelligence and superstition. She started reading quite a bit, but we keep that restricted to analog. T'Challa doesn't trust her with a network device. And the other? The same. Tarak sits there, refusing to speak, day after day. The idea behind it was solid, but Black Bolt shouldn't have brought him here, or brought him back. Are you worried about how long the Swan is spending in isolation? I was, but then I asked the others to spend time with her in shifts. Everyone agreed, except Stephen. Any problem with the others? A few. Henry has undergone a radical physical change. He hasn't asked me for any help assessing his mutation, but our concern, his mind, seems unaffected. He is as sharp as ever. He's teaching the Swan Latin, and she's teaching him 3 or 4 languages I've never heard about. I haven't seen or heard from Stephen in over a week. I called, but Wong informed me that he's indisposed. And there is something going on in Attilan, but I haven't been able to get into it because there's a much bigger problem. A Wakandan strike team captured several Atlantean generals and plans to try them for war crimes against their capital city. In retaliation, the Atlanteans tried to arrest the Wakandan ambassador to the UN. Something went horribly wrong, and the ambassador and his entire entourage were killed. Things escalated further. Wakanda responded, but the intelligence they were acting, no, on was bad. It was the ruse, and 60 elite Wakandans were killed. T'Challa and more. Last time I checked, they haven't spoken. Necropolis. That's far enough, Namor. Don't take another step. What do you want? To talk. To offer you something. To do you a favor.
You forgot your sword. If you're offering to fall on it, posturing is a bad idea for a dead man. So is playing king when one is clearly not. I wasn't you to listen to me. Wakanda cannot win a war with Atlantis. I think you're overestimating the strength of Atlantis and any perceived weakness of Wakanda. Namor, you're wrong. Ah, the fabled technological superiority of the Wakandan people. The great nation that has never fallen. And men call me arrogant. T'Challa, your problem is not resources, tactics, or even your people's army. It's the people. Many do not care for the pretender who keeps Wakanda's throne warm. The queen, your sister, they all has enemies. These enemies whisper and would like to see her fail. How do you think we so easily dispatch your elite warriors? How do you think we knew they were coming? Now, would you like to hear the favor I can do for you? If you have a message that needs to reach the queen, I can make sure she receives it. Beyond that, I'd make no promises. Very well. Tell her I want peace. I will offer favorable terms, and in exchange, I ask only for a cessation of hostilities. This is the only time I will make this offer. She will refuse. Then she's a fool and needs someone to help her make the correct decision. I would refuse as well. Liar. Regardless of how you feel about me, you know we have better things to do. Better things to be doing than spilling blood. Make your offer, Toro. Make your offer through the normal channels. If I choose the fight for it in the council, it's best if the idea doesn't originate with me. Very well. Consider it done. Oh, you're welcome. तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि पिछला हम लोगों ने जो अभी तक जो भी देखा था, वो सैवेज लैंड वाला और वो सब कुछ, उसके 1 महीने बाद हम देखते हैं टोनी स्टार्क को स्पेस में, और टोनी स्टार्क स्पेस में अपने जेट से बात कर रहा होता है रीड रिचर्ड से। वो हालचाल ले रहा होता है ब्लैक स्वान का, टेरेक्स का, जिनको उन लोगों ने बंदी बना रखा था इस वक्त। वो पूछ रहा होता है कि ब्लैक स्वान क्या कर रही है, और लोग उन पे, मतलब बाकी के जो इल्यूमिनाटी के मेंबर्स हैं, वो नजर रख रहे हैं या नहीं रख रहे। यहाँ पर रीड बताता है कि उसे मशीनें नहीं दी जा रही ब्लैक स्वान को, उसे सिर्फ एनालॉग वे से ही बहुत सारे नॉलेज प्रोवाइड करी जा रही, क्योंकि वो पढ़ना चाहती है, वो नॉलेज लेना चाहती है। और टेरेक्स जो है वो बोलता नहीं है। बट यहाँ पर उसने एक इंटरेस्टिंग बात बताई कि बीस्ट जो है वो अब रीड रिचर्ड से अपने म्यूटेशन के बारे में नहीं पूछता, अपने दवाई के बारे में, अपनी वैक्सीन या फिर जो भी चीजें वो यूज करता होगा पहले, जिनकी वजह से वो ह्यूमन से बीस्ट में या फिर बीस्ट से ह्यूमन में वो ट्रांसफॉर्म होता था, वो नहीं करता।
अब वो काफ़ी ज़्यादा इंडल्ज्ड है ब्लैक स्वान के साथ। उसने एक ब्लैक स्वान को जो है वो लैटिन सिखा दी है और ब्लैक स्वान से वो 3-4 लैंग्वेज सीख चुका है, तो मतलब वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व्ड है इस टाइम पे ब्लैक स्वान के साथ। डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में पूछने पे रीड बताता है कि वोंग जो कह रहा है डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में टोनी टोनी पूछता है रीड रिचर्ड से, तो तो रीड बताता है कि वोंग जो है उससे बात हुई है रीड की। एंड स्टीफन स्ट्रेंज जो है उससे बात नहीं हुई है वोंग की, तो वोंग को नहीं पता कि वो कहाँ पर है इस वक्त। और हम देखते हैं कि स्टीफन स्ट्रेंज जो है वो कुछ डार्क मैजिक वगैरह कुछ प्रैक्टिस कर रहा है। और एटलिन के बारे में बताता है रीड रिचर्ड्स की वहां पर एटलिन पे भी कुछ चीजें चल रही हैं, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जिसके बारे में अभी हम लोगों को आगे पता चलेगा। एटलिन बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ एटलिन क्या है। एटलिन वो जगह है जो कि चांद के ऊपर है, जहां तक मुझे पता है। और एटलिन जो है वो घर होता है इनह्यूमंस का। इनह्यूमंस वो लोग हैं जिनका लीडर होता है ब्लैक बोल्ट, जिनके मेंबर्स होते हैं मेड्यूसा, मैक्सिमस और कार्नैक। ये सभी लोग इनह्यूमंस के मेंबर्स होते हैं। आप लोगों ने ब्लैक बोल्ट को डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा होगा, जिसकी आवाज बहुत ज्यादा तेज होती है, जो बोलता है तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जिसने थानोस को मारा था अपनी आवाज से। और हाँ, फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि पता चलता है कि रीड बताता है कि वकांडन्स और एटलांटिस के लोगों से अ, एक वॉर चालू हो चुकी है, सिविल वॉर टाइप। अंदर ही अंदर कुछ कुछ चीजें हो रही हैं वहां पर। इन्फिल्ट्रेशन हो रही थी वकांडा में, जिसकी वजह से वहां पर वकांडन्स ने भी जब वापस रिबटल किया, तो ऐसे करके मतलब कुछ पॉलिटिकल वॉरफेयर टाइप चल रही है वहां पर वकांडन्स और एटलांटियंस के बीच में। फिर हम देखते हैं नेक्रोपोलिस यानी कि वकांडा में नामोर आता है और ब्लैक पैंथर से कुछ बात करता है। ब्लैक पैंथर से वो कहता है कि मैं कुछ ऑफर करना चाहता हूँ, तुम्हें मेरी बात रानी तक पहुंचानी होगी। यहाँ पर वो बोलता है, वो समझाता है कि वकांडा जो है इस टाइम पर वॉर नहीं लड़ सकती अटलांटिस से। ब्लैक पैंथर बोलता है कि तुम अंडर एस्टिमेट कर रहे हो वकांडा को, और हम जीत सकते हैं, ये कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ बहस करता है ब्लैक पैंथर नामोर से, पर नामोर क्या यहाँ पर बहुत एक इंपॉर्टेंट बात बोलता है। वो कहता है कि अभी जितनी भी चीजें चल रही हैं हमारे दोनों की लैंड्स पे, वकांडा और एटलांटिस, इन सबसे बहुत बड़ी चीज से हम डील कर रहे हैं। और आने आने वाली जो चीज है यानी कि इनकर्जन, वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो हम इन चीजों में नहीं उलझ सकते। ये बात ब्लैक पैंथर को भी अंदर ही अंदर पता होती है, पर वो प्रिटेंड कर रहा होता है कि उसे इस चीज का डर नहीं है। पर फिर भी आखिरी में वो मान जाता है। वो कहता है कि काउंसिल में जब बात होगी तो ब्लैक पैंथर नामोर का सपोर्ट करेगा, पर उसने शर्त रखी कि नामोर को ही पहले ये आइडिया क्वीन के सामने एक एज एन ओरिजिनल आइडिया की तरह, लाइक पीस, एटलांटिस और वकांडा की पीस जो है एज एज एन आइडिया प्रपोज करना होगा काउंसिल में, तब वो उसका साथ देगा ब्लैक पैंथर। तो नामोर कहता है ठीक है, डन है। अब आगे। Castle Doom, Latveria. So, Christoph, tell me, how are things? Exciting as always, Dr. Richards. In spite of the recent hearings around here, we are doing so well. He's not really interested, Christoph. He's just being polite. Isn't that right, Richards? No, I'm always interested in the well-being of my friends. And you asked me here, Victor. So, if there's something else on your mind, it's odd. When you possess the kind of national machinery inherent to monarchies, you come to find that a steady flow of information is one thing that is always constant.
The trick, of course, is determining what is and is not valuable, especially in the face of conflicting information. You, for example, I have reports of you lost in space-time, and yet you are here. Is that, Dr. Richards? Sometimes I am one place, sometimes I'm in another. Some people sleep at night, some others watch over those who do. So this will be your answer. Were I to ask, where have you been lately? Everywhere. And what would you say if I were to ask what you have been doing? I would say many, many things. I always forget. Is it inappropriate to complain to chef? Hmm. Well, be bold, I say. So please, doctor, tell whoever prepared this. They have made a wonderful, wonderful creation. And whatever difficulties you might need to overcome with your face and that mask, in order to enjoy this perfection, you should. You should do whatever it takes to keep you from speaking further. To stop inquiring about things that are far beyond your concern. We saw you here a month ago. The world hanging in the sky. What was that? Idea what you're talking about. I saw with my own eyes. I had the dead bodies of some creatures from another world secretly away in my morgue. It happened here, in Latveria, to my country, to my people. I will know what game is that you are playing. There is no game. If it were a game, there would be winners and losers. I have come to believe in this. There will only be latter. Thank you for the dinner, Victor. But do not contact me about this again. There will be no other one. Attila, home city of the Inhumans, currently over New York City. There are rumors in the heavens and tyrants and thieves. Bleak potents herald killers in the stars. Where is our star? Medusa, where is our husband? I I do not know. Black Bolt is hiding things from us. I'm spinning the circle, brother. Cogs in an inhuman machine. Again haze clouding my vision. Maximus, the Maker is building something wicked.
But don't blame me. That wasn't my idea. It was yours. And I'm not going to stop unless you told me to. Go on. No? Nothing? Very well. Let's burn it all down. Necropolis. Later. Hello, Reed. Do you have a moment? Actually, I've had a very long night already, so I want to finish this before I shoot myself back across the multiverse to my family. It's important. Tangential scenarios. Game theory for nation building. Go on. Two countries at war with one another. An opportunity presents itself to possibly end the conflict. Reasonable, but it also might serve as a destabilizing element within one of the countries. The country, it would be argued, most likely to win the war. Also, the circumstances surrounding this potential peace are external, affecting both countries and creating the atmosphere for the change state of peace to be achieved. Possible peace between Atlantis and Wakanda because of the threat of incursions? Yes. Seems pretty straightforward. Make the peace. How is this not obvious to you? I do not trust him. And I made a promise to him regarding his mortality that I intend to keep. Well, I don't believe in violence, T'Challa. And I don't believe in compromising either the sovereignty or the safety of my nation. But look at what the world has made us both do. Is it going to be enough? Infinite worlds, T'Challa. You know it's not. And you know what do you have to do, don't you? Yes. ओके, तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि कासल डूम यानी कि लेथवेरिया में डूम के कासल में डूम इनवाइट करता है डॉक्टर स्ट्रेंज और रीड रिचर्ड्स को। लास्ट टाइम हमने देखा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो 1 हफ्ते से वोंग से मिला नहीं था क्योंकि वो डार्क मैजिक वगैरह कुछ प्रैक्टिस कर रहा था। बट उसके बाद हम देखते हैं कि उसे इनवाइट आता है और डूम ने उसे बुलाया है यहाँ पर खाना खाने के लिए रात में। रीड रिचर्ड्स, डॉक्टर डूम, ये दोनों का जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक है। इन दोनों के बीच में बहुत ही कोल्ड वॉर टाइप सिचुएशन रहती है हमेशा से। डॉक्टर स्ट्रेंज स्मार्ट है और डार्क मैजिक जानता है, तो ये तीनों काफ़ी मतलब एक दूसरे को मैं कहूँगा एक्विंटेंसेस हैं, मतलब एक दूसरे के, ये जानते हैं एक दूसरे को। इन लोगों को यहाँ पर डूम डूम बुलाता है, क्रिस्टोफ और डूम। क्रिस्टोफ उसका बेटा जो कि यहाँ पे बताया गया है इसका बेटा है। तो वो दोनों यहाँ पे बैठ के इन लोगों से चर्चा करते हैं। और डूम जो है हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि डूम
ने वो चीज़ विटनेस करी थी जब यहाँ पर इनकर्जन हुआ था इनके यूनिवर्स में, डूम के कासल के ऊपर वो वर्ल्ड आया था और वहाँ से फिर लोग आए थे। ब्लू इनकर्जन था, वहाँ पे मैप मेकर्स आए थे और डूम के लोगों ने फाइट किया था उनसे। यहाँ पर इसी के बारे में डूम जो है वो रीड से टॉन्ट करते हुए पूछता है और काफ़ी सीरियसली, क्योंकि डूम को अभी ये सब पता नहीं है, इनकर्जन्स के बारे में पता नहीं है कि क्या हो रहा है। उसने बस वो एक इवेंट विटनेस किया था अपने कासल के ऊपर। तो उसे ये लग रहा है कि रीड और डॉक्टर स्ट्रेंज कुछ खिचड़ी पका रहे हैं जो कि डूम को नहीं पता है। डूम वही फाइंड आउट करने के लिए इनसे बात करता है, इनसे पूछता है, पर रीड रिचर्ड्स यहाँ पे बहुत सैड वाला फेस बना के बोलते हैं कि हमें नहीं पता, हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। डॉक्टर स्ट्रेंज भी यही सेम बात बोलता है कि हमें नहीं पता। और डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पर धमकी भी देते हैं, बहुत सटल वे में धमकी देता है, कहता है कि उन सारी चीजों के बारे में मुंह बंद रखो जो कि तुम्हारे कंसर्न के बाहर है। उन सारी चीजों के बारे में इंक्वायरी मत करो हम लोगों से, क्योंकि हम लोगों को कुछ भी नहीं पता, हमारे पास कोई आइडिया नहीं तुम क्या बात कर रहे हो। डूम यहाँ पर काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि भाई, मेरे लोग मर रहे हैं, मेरी आंखों के सामने ये सब हुआ है और लैथवेरिया में हुआ है मेरे लोगों के साथ। तो वो कहता है कि ये तुम लोग कोई गेम खेल रहे हो। डॉक्टर स्ट्रेंज और रीड वहां से उठते हैं खाना खा के, जो कि काफी टेस्टी खाना होता है, डॉक्टर स्ट्रेंज ने बताया ही था, और कहते हैं कि कोई गेम नहीं है। अगर कोई गेम होता तो एक हारने वाला होता और एक जीतने वाला होता, पर यहाँ पर सिर्फ उसका परिणाम होने वाला है। यहाँ पर जो चीज चल रही है उसका हमें सिर्फ रिजल्ट मिलेगा। और ऐसे ये बोलते हुए वहां से रीड और डॉक्टर स्ट्रेंज चले जाते हैं और पता चलता है कि वो एक होलोग्राम होता है, डॉक्टर स्ट्रेंज और रीड रिचर्ड्स का होलोग्राम होता है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं एटिलन, जिसके बारे में बताया मैंने कि चांद पर एक सिटी है इन ह्यूमंस की, जो कि वहां रहते हैं। अभी यहाँ पर दिखाया गया कि करंटली ओवर न्यूयॉर्क सिटी, जो कि अभी ये फ्लोट कर रही है स्पेस में न्यूयॉर्क सिटी के जस्ट ऊपर, यानी कि आउटर आउटर स्पेस में, जस्ट ऊपर नहीं, आउटर स्पेस में। और यहाँ पर मेड्यूसा दिखाई जाती है और बाकी कुछ और लोग भी दिखाए जाते हैं, कुछ और ह्यूमंस, जो कि ब्लैक बोर्ड के बारे में बात करते हैं। और ये लोग बात कर रहे होते हैं कि जन्नत से कुछ थीव्स आए हुए हैं, चीजें चुरा लेते हैं, चीजें नहीं मतलब वर्ल्ड्स को वो कर रहे हैं, लोग वहां से थीव्स बोलेंगे, टायरेंट्स बोलेंगे, या फिर मतलब डकैती हो रही है, इस तरह की कुछ बात करते हैं ये लोग, क्योंकि इन लोगों को क्लियरली नहीं पता कि हो क्या रहा है। इनको बस ये पता है कि स्पेस में कुछ तो चल रहा है, हेवेंस में कुछ तो चल रहा है। और टायरेंट्स और थीव्स जिनकी ये बात कर रहे हैं वही सिदरा मारिस, यानी कि वो मैप मेकर्स, उनकी बात हो रही है कि वहां से लोग आते हैं और चीजें खराब करते हैं। और यहाँ पर कहती है मेड्यूसा कि ब्लैक बोल्ट कुछ बता नहीं रहा है, बहुत सीक्रेटिव है इन सब चीजों के बारे में। फिर हम देखते हैं मैक्सिमस को। मैक्सिमस ब्लैक बोल्ट का भाई होता है और वो थोड़ा साइको होता है, मतलब वो थोड़ा सा, आप उसे थोड़ा पागल टाइप समझ सकते हो। वो बहुत स्मार्ट होता है, अपने इनह्यूमंस का लाइक साइंटिस्ट टाइप ही होता है वो। और वो थोड़ा सा पागल होता है वो, और बहुत ही डिस्ट्रक्टिव दिमाग का होता है। और यहाँ पर वो ब्लैक बोल्ट का कहा सुना मान रहा है, ब्लैक बोल्ट यहाँ का राजा है, और ब्लैक बोल्ट उससे कोई मशीन बनवा रहा है। ये मशीन काफी हद तक वैसी ही दिखती है जैसे कि हमने रीड रिचर्ड्स को बनाते हुए देखा थी, वो वाली मशीन जिससे उसने दूसरे प्लेनेट को तबाह किया था। फिर यहाँ पर, हाँ, फिर हम नेक्रोपोलिस में देखते हैं कि रीड रिचर्ड्स भी वही मशीन बना रहा होता है। और यहाँ पे ब्लैक ब्लैक पैंथर आता है। ब्लैक पैंथर रीड रिचर्ड से बात करता है इस बारे में कि वो जो वकांडा और एटलांटिस वाली जो सिचुएशन है उसके बारे में। यहाँ पर रीड रिचर्ड से वो सलाह मांगता है कि क्या मुझे पीस कर लेनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब वॉर है और ये जो पीस है, ये पीस एक एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हो रही है। एक्सटर्नल फोर्स वही, यानी कि इनकर्जन। यहाँ पर रीड कहता है कि ऑब्वियस बात है, तुम्हें कर लेनी चाहिए पीस। और यहाँ पर ब्लैक पैंथर उसे रीड को बताता है कि यार मुझे भरोसा है नहीं नामोर के ऊपर, और मैंने उसको धमकी वमकी भी दे रखी है, उसको जिंदा मतलब उसकी जिंदगी के ऊपर, कि मैं मार वार दूंगा उसे। और यहाँ पे मतलब एक सार्कास्टिक वे में बोलता है कि मैंने प्रॉमिस की हुई है उससे कि उसकी जिंदगी कब तक रहेगी उसके हिसाब से मैंने उस पर प्रॉमिस कर रखा है। उसने वो धमकी दी थी ना, आप लोगों को याद होगा, जिसमें वो कहता है कि आई विल किल यू। तो यहाँ पर रीड रिचर्ड्स कहता है कि नहीं, वायलेंस में बिलीव नहीं करता मैं, तुम बात मत करो, मुझे नहीं पता इस बारे में। फिर यहाँ पर ब्लैक पैंथर कहता है कि अगर मेरे नेशन पे कोई भी चीज होती है, कुछ भी दिक्कत आती है, तो मैं वो नहीं बर्दाश्त करूंगा। फिर उसके बाद
यहाँ पर हम वो देखते हैं वो मशीन कि उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना रखी होती है रीड रिचर्ड्स ने, मल्टीपल। और यहाँ पर वो उससे पूछता है ब्लैक पैंथर कि क्या इतनी मशीनें काफ़ी होंगी? तो वो कहता है कि इनफाइनाइट वर्ल्ड्स हैं टचाला, तुम जानते हो ये काफ़ी नहीं है। और यहाँ पर तो यही हिंट हो रहा है कि रीड रिचर्ड्स वो प्लान बना रहा है, जिसमें वो बहुत सारे अर्थ्स को तबाह करने वाला है, एक साथ। बहुत सारे इनकर्जन्स को बचाने वाला है। पर इतनी काफ़ी नहीं होंगी, जैसा कि उसने कहा। अब आगे। Wakanda. The next day, there were 7 birds in Kingdom yesterday, 3 boys and 4 girls, good sons and daughters of Wakanda. But the joy of these few new lives does not make up for the many that were stolen from us by the terror state of Atlantis. Blood demands blood. As you know, thousands of our people died when Prince Namor and his Atlantean forces flooded our capital city. In addition to this loss of life, we suffered the strategic destruction of much of the Wakanda's military hardware and had massive damage to our basic infrastructure. These are setbacks that we have now recovered from due to our diligence and proper oversight. So while he is not a member of this Work Council, Interior Minister Mbaka is on hand to answer any of your questions or to allay your fears you might have regarding preparedness. But as your queen, let me offer you my word. We are ready to administer Wakandan justice. We are ready for war. But something has happened. What is it, sister? Namor sues for peace. A treaty between our two nations, formalized at a summit, which would mark the end of hostilities. What are you going to do, Suri? You know him better than anyone here. What would you advise? Life, and not death. Yes, Namor must pay with his life. I have sworn to do it myself. But let's use this opportunity to counsel, to continue to heal our nation. Any war means the loss of more of our people. Why would we do that when we could avoid it? What is there to gain? The honor we have lost, because the world was watching as Wakanda fall. Because the world needs to be taught a lesson in the cost involved when attacking the walls of the Golden City. In all the recorded history, the world has never seen us weak. This is not our retribution, or a man paying the blood price. We must send a message. And you think a full-scale war is the best way to send a message, General Hala? I think that, day after day, you sit in your dead city talking to spirits, and that mystic wrath has finally reached your brain, T'Challa.
You have become my king? You dare to? Hold. I understand avoiding violence by appearing violent. But you do not know Namor. I understand the will of the people. I only wish for my sister, our queen, to make a decision based on all available facts. If we start a war, it will not end until one of our nations has fallen. That is the truth, and a hard one. And there are beasts in the jungle, T'Challa. Yet still we hunt. We are a people of great pride, my queen, and the people cry out for justice. Blood demands blood. We are yours to command, Shuri. What would you have us do? Make ready your enemies, General. Wakanda is going to war. अगला इशू करना है? अगला इशू करना है तो कर सकते हैं। कर लेते हैं, कर लेते हैं। ठीक है भाई, ये अगला इशू हो मतलब कर सकते हैं, अगर करना चाहो तो हो जाएगा। 10 मिनट एक्स्ट्रा ले लेंगे। हाँ, तो हमने अभी तक देखा कि वकांडा अगले दिन, यानी कि रात में टचाला गया था रीड रिचर्ड्स के पास, उसने सब बात करी थी। अगले दिन काउंसिल मीटिंग होती है वकांडा के अंदर। काउंसिल मीटिंग में शूरी, यहां पर हम देख सकते हैं कि क्वीन है वकांडा की, और शूरी जो है यहां पर इस काउंसिल में वॉर की बात करती है। वो कहती है ब्लड डिमांड्स ब्लड। वो कहती है कि नामोर के लोगों ने बहुत अत्याचार किया है वकांडा के ऊपर, उसने फ्लड कर दी थी पूरी सिटी। हमने ऐसा ही कुछ वकांडा फॉरएवर मूवी में भी देखा था, जिसमें नामोर जो है वो डायरेक्टली हमला कर देता है, वॉर छेड़ देता है वॉर वकांडा के ऊपर। और ऐसा ही एक काउंसिल मीटिंग हमने वकांडा फॉरएवर मूवी में देखा था, जिसमें रामोंडा, क्वीन रामोंडा जो है ऐसी बातें करती है, वॉर की बातें। पर यहाँ पर शूरी है, और शूरी यहाँ पर बताती है ये सारी चीजें कि बहुत अत्याचार हुआ है, बहुत मैसिव डैमेज हुआ है, और मिलिट्री हार्डवेयर को और वकांडा के लोगों को, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत डैमेज हुआ है। पर वहां पे उस तक ये बात पहुंच चुकी है, नामोर ने ये बात फॉर्मली जो है वो कर दी है, पहुंचा दी है क्वीन तक ये बात। यहाँ पर क्वीन पहले ही ये बात बोल देती है कि नामोर ने पीस के बारे में बात करी है। तो यहाँ पर काउंसिल का एक बंदा जो है वो फिर से थोड़ा सा काउंटर करता है और बोलता है कि हमें करना ही पड़ेगा वॉर, हम डरते नहीं है। जिस पर टचाला जो है वो नामोर के पीस वाली बात पर ही टिका होता है, और वो कहता है कि हमें पीस करना है, हमें वॉर नहीं करनी। नामोर को करना पड़ेगा, पर अभी वो उसका समय नहीं है। अभी हम लोगों को बहुत सारी चीजें और चीजों पे फोकस करना चाहिए। वो यहाँ पर लोगों को बता नहीं सकता कि आगे क्या आने वाला है। उसको पता है कि आगे क्या आने वाला है, पर यहाँ पर वो लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि इनकर्जन्स हैं और ये सारी चीजें हैं। इसलिए वो बहुत तरह तरह की बातें घुमाता और कहता है कि वायलेंस ही एक रास्ता, एकमात्र रास्ता नहीं है। तो यहाँ पर वो आदमी और भी बहुत सारी चीजें बोलता है। वो कहता है कि हमारे प्राइड की बात है, हमारे डिग्निटी की बात है, और जंगल में तो शेर भी होता है, पर फिर भी हम हंट तो करने जाते ही है ना। तो रामौर के लोग कितने भी खतरनाक हो, हम पीछे नहीं हट सकते। ये हमारे रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, हमारे सिटी की, हमारे वकांडा की सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। तो फिर यहाँ पर शूरी जो है वो काफी ज्यादा इंस्टिगेट हो जाती है, भड़क जाती है, और फिर वो कहती है कि ठीक है, अपनी आर्मीज रेडी करनी चाहिए हमें। वकांडा जो है वो ऑल इन वॉर डिक्लेयर करती है यहाँ पे। अब अगला इशू, द सिग्नल। The signal. Earth's mightiest heroes. Captain America, Iron Man, Thor, Hawkeye, Black Widow, Hulk, Wolverine,
Spider-Man, Captain Marvel, Spider-Woman, Falcon, Shang-Chi, Sunspot, Cannonball, Manifold, Smasher, Captain Universe, and Hyperion. Chhatarpur, India. Origin bomb impact site. Site purpose self repair. Repair failure. Valve terminal. Earth, Australia. Origin bomb impact site. Site purpose communication. Message. In progress. System failure. Multiversal fracture point. Valve terminal. Shield observation station. The hub. The signal is the problem. And each time it starts up, 90% of the world's electrical grids go down. Planes and orbiting satellites are dropping like flies. Missile silos are auto-launching. Dams are breaking. And we have meltdown at 19 different nuclear power sites. The enormity of this thing, Captain, it's complete global collapse. And it's happening every 6 minutes. The duration of it is all that changes. No other variables. Never more than 8 seconds. But that's more than enough. Some kind of scaled up electromagnetic pulse stack. This is more like a solar flare in terms of reach. But no, power resumes after cessation each time. So it's more disruptive in nature than destructive. It's like it's using all our energy sources to amplify its own strength. And that's not all.
the lightning storms, or any early warning. This amount of energy, if this keeps up, we are going to be talking about atmospheric problems as well. Then we work faster. How are you handling the stress, Dr. Banner? I've actually seen my whole world die in front of my eyes before, Captain. I'm doing what I can to keep things in perspective. What about locating the source of the signal? There's nothing to find. As soon as the sound starts, all electronics stop, and whatever I've used to track residual energy, when we're back online, there is so much of it. I'm looking for one needle in all the world's collective haystacks. You will come up with something. Cab, listen, I could use another set of eyes here. Maybe we could get Tony in the room, and together. I wish that was an option, Bruce. But a man has problems of his own right now. Per atmosphere, formerly geosynchronous orbit. Captain Marvel, a little help. You want me to rate it? Once we tear into satellite, the pieces will burn down the re-entry. I'm worried about the core. We don't want. Understood. Got it. Iron Man, what do you want me to do with it? Well, it's nuclear. Can you make the throw? Smasher, what's the situation on the ground? Yeah, good, you know. London Heathrow Airport, United Kingdom. But we are not really on the ground yet, and we have got fire. I'm on board, Smasher. Clearing the plane. Now, we off the aircraft. Easy, all yours. I'm going to dump this one on the ocean, but it isn't working. We're almost out of the runway to pile them on. And even when the planes in the air get their power back, air traffic control has already lost track of them. We have it under control, Smasher. We will use Heathrow as a Western European hub. Instead of Falcon, all we need now are the locations, directions, and speeds. Okay, Spider-Woman, here comes. Sound off. Earbirds. 1, 27 miles southeast, 408 meters per hour. 2, 42 miles northeast, 423 meters per hour. 22, 220 miles west, 510 meters per hour. Give me 20 minutes. We'll have most of the major airports convert. Nice thinking, Sam. Natasha, update. I'm sorry, Captain. We are too late.
Elgin County, North, North Gyeongyang Province, South Korea, site of the Elgin nuclear plant. Stage 7 reactor meltdown. I've seen this before. There won't be any survivors. We should. Enough! I am its god. The thunder and lightning are mine to command. And still they defy me. I will not suffer. This. Grandma always said me everybody gets sick. We can all be together again. A big party with all of our friends. Of course, Grandma and Grandpa can come too. This is a symptom of greater illness. I don't like it. I don't like that at all. You did it. You contained the fallout. But what about the signal? The signal is part of the sickness. Something seeking to remake the worlds. You getting this, Cat? I think the universe is telling us it's coming from one of the bomb sites. Yep, on it. We're running out of time. Dr. Banner, 35 seconds till signal commences. Not enough time to check them all. So start somewhere. Get what I can, sir. You, get those off the monitors. Give me satellite feeds on the origin sites of the related targets. Point something at Mars. And didn't Sunspot receive related intel about something happening on the AIM island? 20 seconds. 10 seconds. Where are you? No. 3 seconds. Hello? What the hell is... Ah! Signal transmit. Signal received. Declined. Signal received. Unable to respond. Signal received. No responses. Signal received. Accepted. Systems back online. Damage assessment forthcoming. I found it, Captain. I found the source. Australia went dark first. It's the Perth site. You ready? We need to be in Perth. Now. You say that. But where I am from, you cannot imagine what the beer costs.
Then we will make you back to Australia. With us. The man in brightly colored clothing said, "We will show you the wonders of the universe and have great adventures. And once you have tasted glory and the thrill to victory, pretty sure we'll survive it." See, this don't look too bad. Damn? Next time we listen to the locals. Eden, the Ulchin team, get them. On my way. A wise course of action, Captain. But do we have the to? Oh, never mind. Okay, contact made. Immediate. Thoroughly violent contact. Now all that's left is to wait. Crazy energy readings. Get me more on this one now. Get me everything you've got on AIM Island. AIM Island, the former Republic of Barbuda. Minister Superior, we were not expecting. Status report on the pod, Doctor. Until the last hour, there wasn't anything to report at all, ma'am. And now? We are detective activity. Previously, we tried pretty much everything we could think of. We started with the laser scalpels. When it was thermal torches, we tried partial phasing and we even exposed part of the shell into antimatter. All unsuccessful, I assume. So, what caused the change? We think it's the signal interference. There might be structure of it. You suspect the message? Something like that. We think the sites might even be communicating with each other. So we got at it, and we've been projecting it back to the pod. What? Ah, yeah, I got the idea from my wife. See, we are pregnant, and she does this thing to make the baby kick. She plays music for her, so I thought if it reacted to the signal once, what would happen if we played it on a loop? You idiot! You know what you did? You woke it up. ओके, तो इस इश्यू में हमने देखा बहुत क्रेज़ी क्रेज़ी चीज़ें।
इस इश्यू को मैंने बीच में कहीं ब्रेक नहीं होने दिया क्योंकि ये इश्यू बहुत बढ़िया था। छतरपुर इंडिया वाली जो साइट थी, जो ओरिजिन बॉम्ब इम्पैक्ट साइट थी, जो कि हम लोगों ने देखा था कि ऐसी 7 साइट्स हैं वर्ल्ड में, जहाँ पर एक्स निहिलो ने टेराफॉर्मिंग अर्थ को टेराफॉर्म करने के लिए बॉम्ब्स गिराए थे बहुत अर्ली गार्डन वाले इशू के अंदर। तो वो जो बॉम्ब साइट्स हैं अब वो म्यूटेट हो चुकी हैं। अब इस वाली जो साइट, ये जो छतरपुर इंडिया का जो साइट है, ये इसका साइट का पर्पस यहाँ पे दिखाता है सेल्फ रिपेयर। इस साइट का पर्पस है सेल्फ रिपेयर। यहाँ से इसमें से कुछ म्यूटेटेड बीइंग्स निकलते हैं अर्थ के, उसमें से कुछ ककून्स में से, और ये बीइंग्स जो हैं वो यहाँ पर कुछ तो बनाने लगते हैं। और ये जो सिंबल है, ये सिंबल हम लोगों ने पहले भी देख रखा है। जब वैलिडेटर वाला जो इशू था, वैलिडेटर इशू में हम लोगों ने देखा था कि धरती पर ये इसी तरीके का सिंबल बना होता है जब वहां पर वैलिडेटर वाला जो इवेंट हुआ था वो हुआ था जब। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि ये सारे बंदे जो हैं कुछ तो रिपेयर करने की कोशिश करते हैं और फेल हो जाते हैं। फिर पर्थ ऑस्ट्रेलिया की जो साइट है, उसका पर्पस होता है कम्युनिकेशन। यहाँ पर हम देखते हैं कुछ ककून्स में से कुछ कीड़े टाइप बींग्स निकलते हैं, स्पीशीज निकलती है, और इनके मुंह के ऊपर कुछ तो सिग्नल सेंड करने वाला कुछ रहता है, और ये मैसेज भेजना शुरू करते हैं। एक बार भेजते हैं, फेलियर होता है, और बार बार ये करते रहते हैं। थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि शील्ड के ऑब्जर्वेशन स्टेशन, जिसको हम द हब के नाम से जानते हैं, ये शील्ड का ऑब्जर्वेशन स्टेशन होता है, और इसके अंदर स्टीव रॉजर्स और ब्रूस बैनर इसके ऊपर वर्क कर रहे होते हैं कि ये जो सिग्नल्स बार बार छोड़े जा रहे हैं, ये क्या है। ये सिग्नल हर 6 मिनट पे छोड़े जाते हैं और 8 सेकंड से, मतलब मैक्स टू मैक्स 8 सेकंड के लिए होते हैं, पर वो इतने ज्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं कि पूरे वर्ल्ड की कम्युनिकेशन सर्विसेज, पूरे वर्ल्ड के इलेक्ट्रॉनिक्स बंद हो जाते हैं, एक ईएमपी की तरह। यहाँ पर कैप्टन कहते भी हैं कि क्या ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स डिवाइस की तरह है, पल्स अटैक की तरह है। तो यहाँ पर वो कहता है कि नहीं, इसकी रेंज इतनी ज्यादा जैसे एक सोलर फ्लेयर की रेंज होती है, यानी कि पूरे वर्ल्ड पे। और ये जो है इतनी ज्यादा दिक्कत पहुंचाती है कि अपर एटमॉस्फेयर में कैप्टन मार्वल और टोनी स्टार्क सैटेलाइट गिरने से बचा रहे होते हैं। यहाँ पर सैटेलाइट के अंदर कुछ न्यूक्लियर कोर, सैटेलाइट के अंदर एक न्यूक्लियर कोर होता है जिसको कैप्टन मार्वल फेंक देती है बाहर, क्योंकि टोनी स्टार्क कहता है कि फेंकना पड़ेगा वरना फट जाएगी वो धरती पे गिरते ही। और उसके बाद यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्लेन्स वगैरह भी गिर रही होती है बहुत सारी, तो वहां पर स्मैशर और ईडन जो है वो लोगों को बचा रहे होते हैं, क्योंकि 6 मिनट, हर 6 मिनट पे 8 सेकंड के लिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वो होती है, जिससे सारी डिवाइसेस खराब हो जाती है और उसका रेसिडुअल इफेक्ट भी रहता है थोड़ी देर तक। तो प्लेन्स वगैरह जितनी भी डिजिटल चीजें हैं जो भी वर्क कर रही हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, वो सारी चीजें खराब हो जाती हैं, तो प्लेन्स वगैरह गिरने लगती हैं। यहाँ पर फैल्कन जो है वो सभी प्लेन्स और बहुत सारे क्या कहते हैं, अ, कह सकते हैं हम लोग व्हीकल्स, जो भी उड़ने वाली चीजें होती हैं, उन सब पे नजर रख रहा होता है चिड़िया की मदद से। वो सारी वर्ल्ड की बर्ड से कम्युनिकेट कर रहा होता है, और वो सभी प्लेन्स की जो जो अभी एयर में हैं, उन सभी की लोकेशन और सारी चीजें बता रहा होता है कैप्टन को, क्योंकि जो रेडार बेस होते हैं, जो भी क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसे, एयर ट्रैफिक जो होती है, जो जो उसको नेविगेट करते हैं या जो मॉनिटर करते हैं, वो उन लोगों के डिवाइसेस भी वर्क नहीं कर रहे हैं, तो वो लोग भी अभी इन सारे प्लेन्स की जो है लोकेशन वगैरह ट्रैक नहीं कर सकते। इसके लिए फैल्कन हेल्प कर रहा होता है कैप्टन की, और स्पाइडर वुमन भी। पर एक मैसेज आता है ब्लैक विडो का कैप्टन को, और कैप्टन फिर वहां पहुंचते हैं और देखते हैं, सॉरी, कैप्टन को एक मैसेज आता है कि हॉकाई, ब्लैक विडो, थॉर और हिपेरियन होते हैं उल्जिन काउंटी, नॉर्थ ग्योनसिंग प्रोविंस, साउथ कोरिया में, जो कि एक न्यूक्लियर प्लांट होता है, और वहां न्यूक्लियर प्लांट जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। और ऐसा कैप्टन ने पहले बताया था कि इतनी सारी जो इफेक्ट्स हो रहे हैं इसके, बहुत इस जो ये जो पल्स अटैक आ रहा है, इसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ रहा है पूरे वर्ल्ड पे। बहुत सारे न्यूक्लियर बेसिस जो है वो मेल्ट हो रहे हैं, और यहाँ पर ये लोग खड़े होते हैं न्यूक्लियर प्लांट के पास ही, जो कि रिएक्ट कर जाता है इस चीज से, और जो पूरी सिटी है उस पर उसका इफेक्ट पड़ने लगता है। और यहाँ पर थॉर जो है काफी गुस्सा हो जाता है कि ये सारी जो इलेक्ट्रिक चीजें हो रही हैं, लाइटनिंग और इलेक्ट्रिसिटी, ये मैं कंट्रोल करता हूँ, मैं इसका गॉड हूँ, पर मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा इस चीज के ऊपर, ये मेरी बात नहीं सुन रही। और यहाँ पर कैप्टन यूनिवर्स आती है, और वो कहती है कि ये एक सिकनेस की तरह है, और उसे वो सही कर देती है, न्यूक्लियर प्लांट की जो भी कंटेमिनेशन था उसको वो कंटेन कर लेती है। और फिर वो बताती है कि ये सब जो हो रहा है ये किसी
बहुत ये हाँ, ये बोलते हैं कि अर्थ की सिकनेस की वजह से है। तो यहाँ पर हॉकआई समझ जाता है कि अर्थ की सिकनेस यानी कि जो टेराफॉर्मिंग हुई थी थोड़े दिन पहले बॉम्ब साइट से, तो वो कैप्टन को बताता है इस बारे में। कैप्टन और ब्रूस बैनर जब तक ये लोकेट करते हैं कि ये कौन सी साइट है, तब तक एक और अटैक आ जाता है और उसके बाद हम देखते हैं कि वो अटैक जो है वो ये जो सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे होते हैं ये कीड़े, ये इनकी जो साइट होती है, इनकी साइट का पर्पस होता है कम्युनिकेशन। तो ये कम्युनिकेट कर रहे होते हैं बाकी साइट से और बाकी साइट्स यानी कि वैलिडेटर का यहाँ पे दिखाते हैं वो वाली साइट जहाँ पे वैलिडेटर रहती है। दूसरी साइट जो कि सैवेज लैंड है, नहीं सॉरी यहाँ पर एक साइट दिखाते हैं वैलिडेटर की और दूसरा हमें दिखाते हैं सैवेज लैंड में उन बच्चों की तरफ भी ये इफेक्ट पहुंच रहा है वहां तक, सैवेज लैंड तक। और उसके बाद बाकी सारे साइट्स पे दिखाते हैं कि सिग्नल रिसीव हो रहा है, बाकी सारी साइट्स रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, कोई डिक्लाइन कर देता है। पर ये जो छतरपुर इंडिया वाली जो साइट थी, यहाँ के जो ये बीइंग्स थे, इनको सिग्नल मिलता है और ये एक्सेप्ट करते हैं। एक पोर्टल खुलता है, इस पोर्टल में वो घुसते हैं और फिर यहाँ पर लोकेट हो जाती है, कैप्टन अमेरिका और ब्रूस बैनर जो है लोकेट कर लेते हैं कि ये कौन सी साइट से सिग्नल्स, ये जो एएमपी अटैक्स हो रहे हैं, ये कहाँ से हो रहे हैं। तो यहाँ पर एडन जो है इन लोगों को लेकर जाता है वो साइट पर और उस साइट पे वही बीइंग्स जो कि छतरपुर इंडिया से थे, वो पोर्टल में घुसे थे, वो यहाँ पर आ जाते हैं क्योंकि इस साइट को बचाने के लिए, इस साइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और फिर ये बीइंग्स जो हैं ये फाइट करते हैं एवेंजर से और ईडन जो है तब तक दूसरी जो टीम थी जो कि वहां पे नॉर्थ कोरिया में थी, वहां से इन बाकी एवेंजर्स को भी लेके आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक प्रॉपर फाइट होती है इन बीइंग्स और इन एवेंजर्स के बीच में और फिर ब्रूस बैनर पूछता है कि हाँ, फिर ब्रूस बैनर जो है वो अपने एआई से पूछता है कि एम आइलैंड वाली जो जो साइट है, वहाँ पर क्या हो रहा है? एम आइलैंड की वो वाली साइट थी जो हमें सबसे आखिरी में पता चली थी। एम आइलैंड ने एक साइट डिस्कवर करी थी। एम आइलैंड पे एक साइट डिस्कवर करी थी एम के एजेंट्स ने, जो कि 7वीं साइट होती है बॉम्ब की। तो इस साइट पे कुछ अभी हुआ नहीं है, यहाँ पे कुछ भी दिक्कतें हुई नहीं थी। पर यहाँ के जो एम के एजेंट्स थे, ये क्या करते हैं कि वो जो सिग्नल होता है ना, जो सिग्नल जो मैसेज आ रहा था, जो वो कीड़े भेज रहे थे, तो वो हर 6 मिनट पे एक-एक सिग्नल भेजते रहते थे और वो फेलियर होता था। पर सक्सेसफुल उनका आखिरी वाला ही हुआ था जो अभी हमने देखा, ठीक है? तो वो जो आखिरी वाला जो सिग्नल सक्सेसफुल हुआ था, वो यहाँ तक पहुँचा था और उस सिग्नल को यहाँ के जो एम का साइंटिस्ट होता है, वो बार-बार लूप पे सुना रहा होता है इस ककून को, ये जो ककून होता है। तो ये जो ककून है, वो म्यूटेट हो जाता है उस साउंड की वजह से और वो फटने लगता है और यहाँ पर ये इश्यू खत्म हो जाता है। अगला इश्यू होगा सेंट एंड रिसीव्ड, जो कि हम लोग आगे कल मतलब कल पढ़ेंगे। तो हाँ, मतलब अभी तक हम लोगों ने काफ़ी बढ़िया आज का इश्यूज़ कंप्लीट कर लिए हैं। अगला हम लोग कल पढ़ेंगे और मैं तो कहूँगा कि आप लोग रिकैप वगैरह लेते रहिए। पुराने इश्यूज़ जो भी छूट रहे हैं, यूट्यूब पे सब अवेलेबल है ही हमारे चैनल पे। और अगर आप लोग को लाइव ये देखना है ये नरेशन, तो आप लोग 10:30 बजे के अराउंड हम ये करते हैं अपने इस डिस्कॉर्ड सर्वर पे। हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर आप जॉइन कर लीजिए और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा।